Assalamu alaikum, this is Iram Saeed, and please remember as you're watching this video that to subscribe to our channel and to press the bell icon so you can get notifications whenever I post a new video. So now, आज की टॉपिक में बात करेंगे about women in leadership, because बहुत बातें सुनने में ये आती हैं कि मुसलमानों में somehow औरतों की leadership को बहुत discourage किया गया. I would encourage you कि आप प्लीज़ अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को ख़ुद स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही बातें थीं जब मैं यंग थी काफ़ी साल पहले. इन्हीं बातों ने मुझे इस्लाम से मुतनफ़र किया था, बिकॉज जब मैं देखती थी कि फॉर द मोस्ट पार्ट in many things that my male counterparts could do, I could either do them equally well or better. तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि फिर औरत को पीछे रहने का या कमतर की ये बात कहाँ से आई है. As I did my research, I was astounded to find out कि इस्लाम का स्टैंस औरतों के बारे में एक्चुअली बिल्कुल इसके बरक्स है. इस्लाम ने औरत को बहुत सी चीज़ों में या तो मर्द के इक्वल कहा है, या फिर कई चीज़ों में मर्द से ऊंचा कहा है, और कई चीज़ों में मर्द को ऊंचा कहा है. इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ बैलेंस अकॉर्डिंग टू नेचर. ये बात समझनी पड़ती है. हम वेस्ट को फॉलो करके, क्योंकि वेस्ट में जो फेमिनिज्म का मॉडल है जिसके बारे में मैं अभी चंद मिनट में बात करूंगी वो क्यों गलत है, हम उसको फॉलो करने में इतने अंधे हो गए कि हम वो मॉडल जो कि एक्चुअली अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया उसको हमने स्टडी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो हाईजैक कर लिया गया था अनफॉर्चुनेटली बाय सम मुस्लिम स्कॉलर्स, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, अपनी तरफ से शायद वो ठीक काम कर रहे थे, बट इट हैज़ बिन हाईजैक्ड, मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट. तो हम बजाय उसको स्टडी करने के हम इन सुनी सुनाई बातों पे चल के तो हमने इस्लाम के बारे में जजमेंट दे दी कि इस्लाम इज़ नॉट फेयर टू वुमेन. इस्लाम इज़ वेरी फेयर टू एवरीबडी, वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स, एवरीबडी, नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, सब के बारे में इस्लाम में इंसाफ है. अदल, अदल किसको कहते हैं? जो चीज़ जिसकी जो जगह है वहाँ पे उसको रख दिया जाए, दैट इज़ अदल, एंड दैट इज़ इन इस्लाम. नो अदर रिलीजन कैन हैज़ इट एंड नो अदर वर्ल्ड सिस्टम हैज़ इट. लेट मी मेक you clear on that. I have lived in America for 30 plus years. I have gone through their so-called justice system, which is the legal system. तो उसको मैं हमेशा लोगों को कहती थी, don't call it the justice system, it's the legal system. Do not make any mistakes about that. So speaking about women in leadership, our first and foremost example comes from the mothers of the Ummah. The mothers of the Ummah, first mother of the Ummah was Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala anha, an example of leadership of women. She was amazing. She was a very successful businesswoman. She was single at the time when she married Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. बट उनकी लाइफ को जब आप स्टडी करते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर इमर्ज होती है. हमें तो सिखा दिया जाता है बस उनका नाम इज्जत से लेना है, चूम के साइड पे रख देना है, बट उनके कैरेक्टर को स्टडी करने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की. यकीन कीजिए मेरे लिए हज़रत खदीजा became such a role model because I was a single woman trying to make myself, trying to live in a world which was of course male dominated even in America. And how do you do that? And I studied her personality कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस वक्त के जो मक्का के सरदार थे वो भी उनसे खम खाते थे, डरते थे उनसे, क्योंकि पैगाम भेजते थे अपना रिश्ते का और वो इनकार कर देती थी क्योंकि शी वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. शी वॉज लुकिंग फॉर अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड वैल्यूज़. जब उनको वो नज़र नहीं आती थी तो चाहे जितने मालदार सरदार थे वो उनके रिश्तों को रिजेक्ट कर देती थी. अब आप सोचें कि ये वो कम्युनिटी थी जिसमें औरतों, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, औरतों को मर्दों की प्रॉपर्टी समझा जाता था. जिस वक्त एक शख्स मरता था तो उसकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी बेटों को, उसमें उसकी बीवियां भी ट्रांसफ़र होती थी, जो कि कई दफ़ा फिर बेटे उन बीवियों से शादियां भी करते थे. ये सोचिए कि ये हालात है बिकॉज वुमेन वर कंसिडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैन. इस्लाम ने आके कहा कि नो, दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी. एक मर्द को जो अल्लाह ताला ने सॉवरेंटी दी ओवर हिमसेल्फ, वही चीज़ औरत को भी दी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम के हो तुम दोनों अल्लाह के गुलाम, और उसके बाद यू हैव ऑटोनॉमी ओवर योरसेल्फ एंड यू हैव ऑटोनॉमी ओवर योरसेल्फ. This was the beauty of Islam. But when you study Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala anha's example,
you realize what a strong woman she was. उनके कैरेक्टर को स्टडी करें, उनमें इंटेग्रिटी कितनी ज़्यादा थी, उनमें काइंडनेस कितनी ज़्यादा थी. कोई सवाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से खाली हाथ नहीं जाता था कभी भी. ये मशहूर था. She was known as the princess of Mecca because she was, you know, surrounded by so much luxury. But जब वक्त आया तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा, जिन्होंने फ़ौरन कहा, लोगों ने, मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी तो कहा जी नहीं वो पहली नहीं थी ईमान लाने वाली, हज़रत वर्का बिन नौफल थे या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे. बेशक वो अव्वलीन में से थे हज़रत अली, लेकिन द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि उस वक़्त अभी तो इस्लाम नाजिल होना शुरू हुआ था, वही नाजिल होना शुरू हुई थी. तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के शहादत दे के वो बैत करने का तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था ना. वो तो उन्होंने आके बताया कि मुझे इस तरह से एक फरिश्ता नजर आया जिसने कहा कि मैं फरिश्ता, और उसने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट श्योर एट दैट टाइम, बट हु वाज श्योर? हज़रत खदीजा वाज श्योर. एंड शी सेड टू हिम कि क्यों नहीं होंगे आप अल्लाह के नबी? यू आर ऑनेस्ट, आप you take care of the poor, you take care of the orphans, you take care of the widows. Why would you not be a nabi? You are a man of stellar character, you have integrity. So आप सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त बात है. और इसमें एक और बहुत बड़ी हिकमत की बात जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते, अल्लाह भला करे हमारे मेल स्कॉलर्स का, कभी इस पॉइंट को मैंने उठाते हुए उनको नहीं सुना, कि आखिर आप ये भी तो सोचिए कि नो क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त नबूवत उनके ऊपर आई थी वो एक बेहतरीन इंसान उस वक़्त तक बन चुके हुए थे. राइट? ही वॉज वाइज, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही हैड विजडम, ही हैड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हामिल थे वो. तो ऐसे शख्स को जब ऐसा विजन एक नज़र आया, एक उनके साथ ऐसा वाक़या हो गया, तो वाई डिड ही चूज टू गो टू हज़रत खदीजा? आखिर उनके बेस्ट फ्रेंड हज़रत अबू बकर भी उस वक़्त मौजूद थे, और भी थे, हज़रत अबू तालिब भी थे, हज़रत हमज़ा से भी वो बहुत क्लोज थे, और भी लोग थे जो उनसे बहुत क्लोज थे, जो कि विजडम भी रखते थे, अक्लमंदी भी रखते थे, उनसे मोहब्बत भी करते थे. नो, ही डिड नॉट गो टू एनी ऑफ देम. ही वेंट टू हिज वाइफ because of the strength of her character and because of her wisdom and her love and her kindness. He felt most comfortable in seeking her guidance. He didn't just go to her for comfort, he sought her guidance and she gave him the correct guidance. So उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से फिर हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में मुश्किलात आनी शुरू हुई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत के आते साथ मुश्किलात आईं. और मैं उस टॉपिक में, उस वाक़े में ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई स्टार्ट क्राइंग अबाउट इट एंड देन पीपल कमेंट कि ये ड्रामा कर रही है. बट प्लीज़ स्टडी दैट कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर सख्तियों में हज़रत खदीजा जब तक ज़िंदा रहीं वो शाना बशाना रहीं उनके. और जब शाह अबी तालिब में जिस वक़्त एक्साइल में थे मुस्लिम्स, हज़रत खदीजा बाय द वे वाज नॉट पार्ट ऑफ द एक्साइल, बिकॉज उनकी इतनी ऊंची स्टैचर थी मक्का में कि कुरैश उनको नहीं एक्साइल में डाल सके, और उनको चॉइस दी गई कि आप चाहें तो आप अपने घर में रह सकती हैं, ये लोग एक्साइल में रहेंगे. शी चोज टू स्टे with her husband and with the Prophet of Islam. She chose to stay in those extremely difficult circumstances, जिसमें वो मक्का की शहजादी वफात किस तरह पाई? पत्ते खाते हुए, भूख, प्यास, अफलास और कमज़ोरी के मारे she passed away. मैं तो शहादत कहूँगी इसको भी, कि बजाय इसके कि थोड़ी सी रिप्रीव ले लेती, कोई उनको कुछ ना कहता, उम्र में भी ज़्यादा थी, तो थोड़ी सी अगर अपने लिए रिप्रीव लेती तो कोई कुछ भी ना कहता. बट ये थी उनकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कि वो आखिरी दम तक, इसको अगर मियाँ बीवी की मोहब्बत भी देखनी हो तो फिर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें. शी डाइड फॉर व्हाट शी बिलीव्ड इन, शी लिव्ड फॉर व्हाट शी बिलीव्ड इन एंड देन शी डाइड फॉर व्हाट शी बिलीव्ड इन. मे अल्लाह ताला increase the darajat of all of our ummahat al-mu'mineen and all the sahaba karam and all of the prophets. So इसमें मैं आप लोगों को जो गलत फहमी है उसके बारे में कहना चाहती हूँ. आप और भी देखें, लीडरशिप में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कम नहीं थी. She made a mistake, yes, but she was very fierce in her passion, in her belief. She did what she believed in. उसके बाद अब अहले बैत की ख़वातीन को देखें,
آپ پڑھیے وہ واقعات کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا تو اس کے بعد کیا کیا تھا اہل بیت کی خواتین نے, کیا کیریکٹر کا مظاہرہ کیا تھا, کیا اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا تھا. میں نے آپ کو اور صحابیات کی بھی ایگزامپلس دی ہیں, جس طرح نصیبہ بنت کعب, حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ون آف مائی فیوریٹ ایگزامپلس, وارئر. کہتے ہیں کہ جب صحابہ کہتے ہیں جب وہ اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گزرتی تھی تو ان کی ہیبت سے ہم خاموش ہو جاتے تھے, اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خود جنگوں میں حصہ لیا ہوا تھا. کیا ہیبت تھی اس عورت کی کہ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جب وہ گزرتی تھی مدینہ کی گلیوں سے تو صحابہ نظریں جھکا لیتے تھے, ان کی ہیبت اور ان کی عزت کی وجہ سے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے فار سینچریز مسلم ویمن ہیڈ لیڈرشپ رولز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, if I am not mistaken, ٹائٹل میں تھوڑا غلط کر سکتی ہوں, بٹ فائنینس منسٹر واز اپوائنٹڈ اے وومن. لیڈرشپ کی پوزیشنز میں تھیں عورتیں, جہاں جہاں قابلیت تھی اس کو سراہا جاتا تھا اور ان کو پھر کام دیا جاتا تھا. یہ بعد میں شروع ہوئی ہائی جیکنگ. 2 or 3 centuries after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم death عورتیں مفتی ہوتی تھیں, محدثات ہوتی تھیں, ہر طرح کے فیلڈ میں عورتیں آگے تھیں. اور عام طور پہ یہ وہ خواتین ہوتی تھیں جن کے اپنے باپ مفتی ہوتے تھے, جن کے اپنے باپ محدث ہوتے تھے, انہی کی بیٹیاں آگے یہی کام کری ہوتی تھی. یعنی they understood Islam properly and they did not hold their daughters back. کیونکہ اگر اللہ نے ایک ٹیلنٹ دیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس ٹیلنٹ کو یوز کریں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس ٹیلنٹ کو یوز کریں. یہ کب اللہ نے کہا کہ عورت کا کام صرف اور صرف گھر چلانا اور بچے پالنا ہے؟ بچے پالنا اور بچوں کی تربیت کرنا عورت کی بہت رتبے والی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ اللہ نے ریسٹرکٹ نہیں کیا اس چیز میں عورت کو کہ بس صرف یہی کرنا ہے. نو, جو آپ کو ٹیلنٹ دیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان ٹیلنٹس کو آپ اللہ کے راستے میں دنیا کی بھلائی کے لیے, اپنی فیملی کی بھلائی کے لیے ان کو استعمال کریں, ضائع مت کریں. سو when did this all change? This all started to become hijacked. One of the early things I can point it out to you. میں بڑی حیران ہوئی تھی شیخ اکرم ندوی کی, آپ کچھ ویڈیوز اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, انہوں نے عورتوں کے رائٹس کے اوپر بہت بات کی ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے, بڑی دلیری سے کہی ہے. اللہ ان کو اجر دے اس دلیری کا, اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور انہوں نے وہ ٹاپ کے محدثین میں سے مانے جاتے ہیں, دنیا کے ٹاپ کے محدثین, اور ان کی بہت کریڈینشلز بھی ہیں, آپ خود چیک کر لیجئے. الازہر یونیورسٹی کی بھی ہیں آئی بلیو, ابھی فی الحال آئی بلیو کیمبرج کے وہ یا آکسفورڈ کے وہ ڈین ہیں. بٹ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے حدیثوں کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے تھے علیحدہ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ, سو ہی فاؤنڈ آؤٹ, ہی سیڈ آئی واز شاکڈ ٹو فائنڈ کہ میری اپنی جو بلیفس عورتوں کے بارے میں تھیں وہ غلط تھیں, وہ اسلام کے مطابق نہیں تھیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ عورتوں کے رائٹس ہائی جیک کیے گئے ہیں اوور دا لاسٹ فیو سینچریز تھرو انفارچونیٹلی اسکالرز آف اسلام. آپ کو پوائنٹ کر کے کہہ رہی ہوں, کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا, معذرت کرتی ہوں. دیکھیے, جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اسکالرز کو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو رتبہ ہے, ان کی جو عزت ہے, وہ کسی طرح سے بھی ہم کم کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں وہ بہت ہائی لیول کی خدمات ہیں, لیکن یہ باتیں کہی گئی ہیں, خود ریسرچ کریں کہ کس نے کہی ہیں, کہ عورت سے کبھی مشورہ نہ کرو کیونکہ عورت تمہیں ہمیشہ غلط مشورہ دے گی. اگر تمہارا 1 دینار کا نقصان ہونا ہوگا تو عورت سے مشورہ کرو گے تو 2 دینار کا نقصان ہوگا. اور عورت سے مشورہ صرف اس وقت کرو جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ جو یہ مشورہ دے گی میں اس کے الٹ جاؤں گا. یہ کس نے کہا ہے, یہاں سے آپ دیکھنا شروع کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا بتدریج مسلمانوں کی ذہن سازی کس طرح ہوئی اور کس طرح چینج ہوئے. کیونکہ یہ کہنا ایک اسکالر کا, آئی ایم شاکڈ, جس لیول کے وہ اسکالر ہیں, بہت ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, بٹ یہ کہنا از شاکنگ بیکاز اٹ گوز اسٹرکٹلی کمپلیٹلی اگینسٹ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو جگہ جگہ اپنی بیگمات سے مشورے کیے, انہوں نے تو جگہ جگہ خواتین کی سے کاؤنسل لی. میں نے بھی آپ سے ایک شیئر کیا, اس کے علاوہ بھی صلح حدیبیہ کے اوپر بھی ہماری ام المؤمنین نے مشورہ دیا تھا, ورنہ صحابہ میں تو میوٹنی ہونے والی تھی. ان کے مشورے پہ انہوں نے احرام کھولا اور سڈنلی دا سچویشن واز ڈی ایسکلیٹڈ. تو بہت مشورہ کرتے تھے وہ. تو پھر اسلام کے بارے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیسے جا کے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوشچن کرنا چاہیے. عورتیں خود ریسرچ کریں اور پتہ کریں. آئی ول ٹیل یو یہ کس طرح سے ہوا تھا, بیکاز جس ٹائم پہ یہ باتیں شروع ہوئی تھیں اس وقت
Muslims were very impressed by these philosophers like Plato and Aristotle. They hated women. یہ تو عورتوں سے نفرت کرتے تھے. یہ تو وہی سمجھتے تھے کہ عورتیں تو اور مرد کی بیسکلی یہ تو کہتے تھے مرد اعلیٰ اسپیشیز ہے اور عورت نچلی اسپیشیز ہے. ان کی یہ بلیف تھی. اور ایرسٹوٹل جس کو اتنی دنیا بڑے فخر سے کوٹ کرتی ہے, مسٹر ارسطو, he said in his book that women are stupid compared to men. God has not gifted them with intelligence. Why? Because they have less teeth than men. This is what he said. That the reason why women are stupid is because they don't have as many teeth as men. کوئی بندہ ارسطو سے اس زمانے میں پوچھتا بھائی تمہاری دو تو تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں, ان کا منہ کھول کے دانت تو گن لو, اتنے ہی دانت ہیں جتنے تمہارے ہیں. So Muslims were impressed by these Roman philosophies and all of that stuff that was coming from the West. Well, in those days it wasn't even the West, but وہاں سے امپریس ہو کے سو وہ ایک ڈائگریس کرنا شروع ہوئے, کیونکہ اسلام سنت نبوی سے ہٹے اور اس کے بعد ایک پراپر ہائی جیکنگ شروع ہوئی ویمنز رائٹس کی. سو ویمن انڈرسٹینڈ دس پلیز. Islam gives you many, many rights, and believe me, if you actually studied Islam and Quran, you will be shocked that you have far more rights under Islam than you do under the Western feminist system that you so idealize. Now let me say a few words about the Western feminist system. The destruction of the Western society can be directly connected to the Western feminist system. It was started, yes, because women wanted equal rights, but they didn't have a framework. Okay, how do we fight for rights? You see, we have a framework. It was given to us 1400 years ago by the one who created everything and knows how to keep everything in balance. We had a framework. They did not have a framework, so they decided to go with what they could see, which was that men control everything, men have all the rights, so we should be like men. We should do everything that men do, and that's how we are going to be empowered, and that's how we will be strong. So one of the first things they did was the sexual revolution, that we will be as sexually liberated as men. First of all, in Islam, even men are not as sexually liberated as the Western man is, right? We are supposed to be under God's law. But women decided, okay, we will be as sexually liberated because we don't want to be just these wives, and we don't want to be these homemakers. We want to do all these other things, and we also want to behave like men. This was the first downfall of the Western woman, because guess what? At the end of the day, no matter how sexually liberated they think they are, they want to still have a husband, and they want to have children, and they want to have a family where the children can be taken care of. And now that system has been totally broken. Western man doesn't feel the need to marry a woman. Why should he? In order to marry a woman, a man has to take responsibility for a woman. This is what Islam says, that it is a huge responsibility that is placed on a man when he marries a woman. He has to take care of her emotional, physical, financial well-being, psychological well-being, and he has to take care of the children that he bears with her. In the West, things have changed. Now, in the name of sexual revolution, teenagers, young girls are getting pregnant. This is the biggest problem the West has faced. So they invented the pill. Okay, wonderful. Women were so happy. Now we are empowered. We have autonomy over our body. How do you have autonomy over your body? Please tell me. You think that consensual sex is giving you freedom? It is giving you strength? No. I know, I have lived in that country. I have American friends. I have Western women who are friends. They all fool themselves because the Western feminist liberalism, they give you beautiful words. They have illustrious words, but they have nothing but words. It is total BS. At the end of the day, the woman is secretly hoping for the man to come and propose to her. That's why you have that song, put a ring on it, whatever. If you like it, put a ring on it. Marry me. Yeah. So why are you pretending that you are just this, totally liberated woman who is as sexually promiscuous as men and she can be just as happy? No.
Allah has made men and women very differently. And only one person is left. If a woman gets pregnant, only one of the two people has to bear the baby and then deal with the fact whether they're going to give that baby up for adoption or going to raise that baby. मर्द तो भाग जाता है. वेस्ट में तो चले सिस्टम मौजूद है लॉ का कि दे हैव टू पे चाइल्ड सपोर्ट, बट चाइल्ड सपोर्ट इतनी सी होती है, रेज औरत को ही करना पड़ता है. अगर यंग एज में वो प्रेग्नेंट होकर बच्चा करती है तो उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ना वो फिर कॉलेज जा सकती है, ना कोई करियर परसू कर सकती है. उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है. और अब इस वक्त सिंस द एडवेंट, अगर इतनी एम्पावर्ड थी वेस्ट की औरत तो स्ट्रेस रेट नीचे होना चाहिए था. record stress rates हैं औरतों के इस वक्त अमेरिका में, record. So this is what that system has given them. I was watching this show that I really like, I enjoy it. इसका जो नया season आया है, The Morning Show, जिसमें Jennifer Aniston is talking about, she's very upset क्योंकि Texas में abortion rights have been kind of overturned. And women are very upset in America because of that, because उन्होंने बहुत fight करके ये लिए थे कि a woman has the right to get an abortion और ये वो, and it is of the safety of a woman, her health is jeopardized, etc., etc., etc. And while all of that is true, that now in Texas, women are crossing the border to go to Mexico to get illegal abortions, etc., etc. And now they're talking about the fact कि हमारी autonomy जो है औरतों की अपनी body पे वो हमसे restrict कर दी गई है. यहाँ तक बात अगर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अपील करेगी कि you know what, this is true, why don't we have the right to do what we want. But असल रूट क्या है प्रॉब्लम कि इस्लाम तो रूट से चीज़ को फिक्स करता है. रूट ये थी कि दिस sexual liberation is the biggest shaitani agenda which has fooled women into thinking कि if we have this then we have autonomy. इस्लाम ने औरत को, आप यकीन करेंगे कि इस्लाम ने औरत को हक दिया है कि वो अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ करे. पाकिस्तान में आई नो उल्टा प्रैक्टिस होता है. लड़कियों के माँ बाप बेचारे बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए. इस्लाम में ऑपोजिट होता था कि ज़रूरत मर्द की है. A man cannot live without a woman. A woman can. It's difficult but she can. A man cannot. And it was a man's requirement कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए. So जहाँ पे अल्लाह ने मर्द को माशरे में फ़ौक़ियत दी या हाउस होल्ड में मर्द को दर्जा ऊपर दिया, बिल्कुल दिया. आई एम द फर्स्ट वन टू एडमिट इट, और ऐसा ही होना चाहिए. I am not against the patriarchal system which is under Islam. I am not against it at all. It is foolish women who keep talking against the patriarchal system. I'll talk about that also. Islam ने कहा कि if you are going to have any kind of pleasure with this woman, then be a man. Be a man as Allah requires you to be a man. You cannot just enjoy yourself with a woman, you have to take responsibility for that woman. Because Allah ने औरत को माशरे में और चीज़ों में, औरत सेंसिटिव होती है, औरत हसास होती है, औरत के जज्बात होते हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा कि पहले ही दिन से बंदे के पुत्र बन के you take responsibility for her. And by the way, for men also, when a man takes responsibility for a woman and his family, that is how he feels most happy, because उसकी identity अल्लाह ने इसी चीज़ के अंदर रखी हुई है. A man who has a family who's happy with him is going to be in heaven. Ask any man. This is what they want. कि my family should be happy with me, I should be a good provider, I'm the protector of my family. So Islam ने पहले दिन से ये कहा कि there can be no consensual, जो कहते हैं आजकल के बच्चे, if it's consensual sex, what's wrong with it? This is what's wrong with it. Islam doesn't recognize that. अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के सामने और माशरे के सामने उस औरत को अपनी बीवी बनाओ ताकि तुम अब उस औरत की वेल बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. वेस्ट में क्या हो रहा है? छोटी सी एज से, टीन एज से लड़कियों के दिल टूटने शुरू होते हैं. बिकॉज गाइज आर गाइज, दे विल बी बॉयज, विल बी बॉयज, दे आर हार्मोन ड्रिवन मशीन्स. they will say whatever they need to say, they will act however they need to act to get that one thing. That is how a man's brain operates. Share this video with your daughters, please, if they are even in Pakistan or abroad. Help them understand. This is how a man's brain operates. Ask, if you are a young girl watching me, ask your dad. Have a frank conversation with him. He'll tell you that. This is how a man's brain operates. Now, good men know how to control themselves. They know how to be under Allah's law. A man is, buying you flowers, buying you chocolates, whatever.
you are secretly falling in love and hoping that he's going to marry me. And he's not, he has no such intention, because majority of men, even white men, when a woman is too easy, they know in their heads, they don't want her to be their wife, because they want to see someone as the mother of their children, future children. So they're like, she's too easy. Every man has had her. Why would I choose her as a wife? So they start getting their hearts broken from a young age. They become damaged. And then they become jaded. And then they start hating men. And then they become these man haters. And then they become these feminists. That, you know, men are our enemy. You need to understand that the whole system has been jigged. It's working against you. If you as a woman truly want to be empowered in this world, understand what Allah Ta'ala requires from you. What are the laws of Islam? Because believe me, I have seen it all. I have lived it. I have lived, alhamdulillah, a life where I have fought battles with such pharaohs that maybe one day, inshallah, when my book comes out, you'll see it. I have even gone up against the US government, alhamdulillah, and I have won. So مجھے کوئی woman empowerment کے آکے lessons نہ سکھائے, خاص طور پہ پاکستان کی بیٹھی ہوئی feminist, جو کہ میں بار بار کہتی ہوں, میرے ساتھ اگر ڈسکشن کرنی ہے, مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں آئیں. I said first, in order to have a debate with me about woman empowerment, you have to show me what you have done in your life on your own, without the help of a man, without the help of a father, without the help of a husband, just on your own. What have you done? I have done it. So I get to speak on that table. You don't. I hope this helps you. I hope I will talk more about women empowerment. Inshallah, I will continue to do these talks. I'm getting more serious now. Ab hum wo wishy-washy baatein nahi karenge. Time has come when we really need to raise strong women so that they can raise strong sons. Thank you for watching.